Okay, Nitish, so let's start the heat transfer snap. As you mentioned, you are preparing for Bihar Public Service Commission, assistant professor in Yes, engineering sir. colleges. So you want snap for heat transfer. So my Yes, first sir. question is to you. Can you tell me the mechanism of conduction in solid? How conduction takes place in solid? Sir, basically, sir, conduction take place in solid two modes, sir. Two mechanism. One is the vibration of molecular energy, lattice vibration, and Mhm. another is free electron available. So suppose you are having a metallic slab. You are having a slab, okay, through which we are conducting the heat. The Yes, two faces are at different temperature. For example, suppose if you will consider the variable thermal conductivity, yes, sir. that plate is made up of some metal. One side there is high temperature, another side there is low temperature, and Yes, heat is conducting. So can you draw the temperature profile considering the variable thermal conductivity? yes, sir. Mhm. Mhm. Just put it. So which one is for metal? You've drawn three curves. Yes, sir. Which one is for metal? Mhm. So metal is above curve. Sorry, okay, sir. Okay, sir. Just one minute, sir. Means conductivity of metals increases with the increase in temperature. Yes, sir. Why we get the more conductivity? Why the conductivity of metal increases at high temperature? Because the electron free is more available in Number metallic. of free electrons are fixed, na? Like with the high temperature, number of free electron will increase. So just increasing the temperature, more emission of electron more. So lattice vibration is more. So the metal conductivity will increase the temperature. What about non-metals? Non-metal conductivity also increases with increase in temperature. No, sir, decrease. So for non-metal conductivity decreases with increase in Yes, temperature. Why yes. decreases? Why decreases? Sir, no idea about subject. Are you sure about that? Conductivity of metal increases with increase in temperature. Or you are just guessing? No, yes, sir, sure. Fine. What do you understand by thermal diffusivity, Nitish? So thermal diffusivity it is a property of material. It is ability of material to conduct and how heat passes through within the material how rapidly. It is called thermal diffusivity. It is another is a it is it is the ratio of K upon mu Cp, where K is the heat conducted upon heat capacity mu Cp. A upon mu Cp. Yes, sir. A K upon rho Cp. K upon rho Cp, sir, where rho is density, Cp is the heat capacity. So gases are having more thermal diffusivity or liquids are having more diffusivity? So the gas having some more thermal diffusivity. So what do you understand by this? More thermal diffusivity of gases in comparison to liquids? Because sir, either two possibility, either two kinds for gases, either conductivity is more in cases of gas, either sir heat capacity is less. So there is so it is the conductivity of air is more than liquids. Mhm.
Okay. Can you tell me something about the wings displacement law, Nitish? So wings displacement basically it is related to wavelength, maximum wavelength corresponding to it's a product of delta m upon t is something constant. It gives the winds displacement theory. Gives winds displacement law. So it related to maximum wavelength occur at a particular temperature. Both are product. Yeah, you heard about greenhouse effect. So greenhouse effects are basically sir when a solar glass so when the shorter wavelength coming inside the when get outside the higher wavelength, so radiation in this trapped by the CO2 molecules. Radiation trapped by CO2 molecules. This phenomena is greenhouse gas effect. Okay. What do you understand by LMTD of a heat exchanger, Nitish? LMTD क्या होता है? So log mean log mean temperature difference. Suppose if I will give you a parallel flow condenser, can you draw the temperature profile for a parallel flow condenser, Nitish? Okay, sir. It's parallel flow. Yes, yes. ठीक है, Nitish. Nitish, can you tell me something about the Prandtl boundary layer theory? Yes, sir. Prandtl number. Prandtl boundary layer theory. Sir, basically it is related to turbulent theory, sir. It is turbulent theory, sir. It basically sir mixing of sir subject याद नहीं recall नहीं कर पा रहा हूँ sir. Ajay, what is the difference between hydrodynamic boundary layer thickness and thermal boundary layer thickness? What is the difference? Sir, basically, sir. Sir, yes, sir. Basically, sir, in hydro boundary layers, due to the velocity gradient exists. But in case of thermal boundary layers, temperature gradient will be exist. One difference due to the hydro boundary layer and thermal boundary layer difference. What is Nusselt number? What is the significance of Nusselt number in heat transfer? Sir, Nusselt number basically, sir, it tells it is the ratio of sir. Sir, it is a ratio of. Sir, it tells about the sir forced convection, either free convection. It related to sir forced convection, sir. It एडजेक्ट याद नहीं आ रहा है, इसका याद नहीं आ रहा है एडजेक्ट फॉर्मूला। अच्छा Nitish, suppose if I will give you some hot water at a temperature suppose 50 degrees Celsius, 50 60 degrees Celsius, you are putting that hot water into the refrigerator just to make some kind of ice. Yes sir. तो मेरे को बताओ the rate of cooling, how it is going to change with time? That is going to remain constant, rate of cooling, it is going to increase or it is going to decrease? Sir, rate of cooling sir constant रहेगा इसमें. Rate of cooling will be constant. Why? Because sir, what do you understand the rate of cooling? Sir, rate of cooling basically sir how much heat transfer, how much heat transfer with the surrounding. It transfer with surrounding. Yes sir. That is the rate of change of temperature.
change of temperature per unit time. Yes, sir. It is dt by dt. Yes, sir. dt upon dt. So that dt by dt is going to remain constant, or it is going to decrease or increase? So it remains constant. Okay. You heard about time constant, Nitish? Time constant of a thermocouple. Yes, sir. So what is the link between time constant and sensitivity? Sensitivity of a thermocouple. Sir, both are reciprocal, sir. Time constant is more. So how you can improve the sensitivity of a thermocouple? What changes you will incorporate in that so that sensitivity of the thermocouple will be higher? So basically, sir, heat transfer coefficient increase. Also, area of exposure also increases, sir. Another is the density of body is less than the decrease, sir. And CP also decrease, sir. Nitish, suppose if I will give you a metallic rod and you need to conduct some experiment to measure its thermal conductivity. Yes, sir. So how you will measure? What kind of experimental setup you are going to construct to measure the thermal conductivity of a metal rod? सर हीट ट्रांसफर कितना करें वो सब फोरियर लॉ से पता कर सकते हैं. फोरियर लॉ से एरिया हीट ट्रांसफर का एरिया क्रॉस सेक्शन से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं सर. कंडक्टिविटी कितना हीट ट्रांसफर हुआ एरिया क्रॉस सेक्शन से और सर टेम्परेचर ग्रेडियंट से पता कर सकते हैं सर. So how, from where you will get the Q? सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर. So have you conducted any kind of experiment in heat transfer lab during your B.Tech? Which subject you are teaching? What you are doing this time? You are in teaching? Yes, sir. So which particular subject you taught? Sir, material science, sir. Material science. Material science, thermodynamics. Okay. So heat transfer also you like? This subject also yes. You like? Yes, sir. So is there any heat transfer lab in the college you are teaching? So there is one lab, sir, but lab किया नहीं कोई lab में. गए नहीं आप कभी. What about the thermodynamics lab, thermal lab? सर ये सब नहीं देखा हूँ. Okay. Okay, my last question is to you, Nitish. What do you understand by steady state? Sir, steady state, sir, property does not change with the time. Does not change the time. Yet temperature is not function of time. It's called steady state, sir. It is constant property with the time. It's called steady state. What are the main assumptions for Fourier law? So Fourier law में sir basic sir first assumption is steady state sir, and the second is conductivity of material is constant sir, and another assumption is area of heat heat transfer is perpendicular to the direction of flow of heat. And sir, second assumption is conduction take place, sir. तो ठीक है नीतीश, अभी मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ. Nitish, some question you answered but not very effectively. Most of the questions you have not answered very effectively. अभी assumption थी, कोई assumption थोड़ी ना कि area perpendicular लेते हैं. Assumption is what, sir? The
heat transfer is one dimensional heat conduction. Yes, sir. The assumption is what? The assumption is the you mentioned like the steady state condition is there. The material is homogeneous, isentropic. Yes, recall नहीं भूल गया. So these things you need to mention. Area तो perpendicular लेंगे, that is not the assumption. ठीक है, तो थोड़ा Yes. सोचना है. आप जब आंसर करते हो तो आई थिंक यू फेस डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग इन इंग्लिश, तो सफिशिएंट वर्ड्स नहीं मिल पाते, तो उससे क्या है, वो आप जो आंसर करते हो वो इनकम्प्लीट लगता है. नितिश, आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है. इंटरव्यू नीड्स टू यू नो अंडरस्टैंड यू लाइक व्हाट यू वांट टू से. Yes, बट sir. वो बहुत इफेक्टिव डिलीवरी नहीं है. वो ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो एंड इट विल बी इजी फॉर द इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड कि यस व्हाट यू वांट टू टेल. तो उसको बहुत ज्यादा अटेंशन रखना पड़ेगा समझने के लिए कि आप क्या समझाना चाह रहे हो. Yes, sir. दैट इज नॉट ए गुड थिंग. Yes, sir. Improve करेंगे. इंटरप्टेड नहीं रखना है, एक फ्लो में आपको बताना है आंसर. Yes, sir. बाउंड्री लेयर थ्योरी आपने बहुत अच्छे से आंसर नहीं किया. बाउंड्री लेयर थिकनेस, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस आपने बताया कुछ, बट नॉट वेरी इफेक्टिवली. नसेल्ट नंबर इज अ रेशियो ऑफ द क्यू कन्वेक्शन टू द क्यू कंडक्शन. नसेल्ट नंबर फोर्स टू फ्री में थोड़ी ना होता है. नसेल्ट नंबर अपने को बताता है कि कन्वेक्शन इज डोमिनेटिंग ओवर कंडक्शन और कंडक्शन इज डोमिनेटिंग. सो इट इज अ रेशियो ऑफ क्यू कन्वेक्शन बाय क्यू कंडक्शन. Yes, sir. थर्मल डिफ्यूजिविटी आपने ठीक बताया. टेम्परेचर प्रोफाइल आपने मेटल्स के लिए गलत बता दिया. ऊपर वाला मेटल्स के लिए नीचे वाला प्रोफाइल बनेगा. मेटल्स का कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है. नितिश, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. उसका रीजन क्या है? मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है. फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव नहीं कर पाते हाई टेम्परेचर पे, बिकॉज द इंक्रीज्ड लैटिस वाइब्रेशन, जो बहुत ज्यादा लैटिस वाइब्रेशन हो जाएगी हाई टेम्परेचर पे. सो ड्यू टू इंक्रीज्ड वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी देयर. Free electron will not be easily able to move from one area to another area. So that's why the conductivity is going to decrease. Whereas in non-metals, there is no free electron, and lattice vibration is always going to increase with the increase in temperature. तो नॉन मेटल्स का कंडक्टिविटी तो बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, बट मेटल्स का घट जाता है. ठीक है, ये आपने शुरू में मिस्टेक कर दिया. इसको यहाँ से आपने भूल गया था, याद नहीं है. तो इसको समझना है नितिश, भूलना नहीं है. इसको याद रखना है, समझना है, फील करना है. विंग्स डिस्प्लेसमेंट लो आप ठीक बता रहे थे, चलो खैर वो आपने बताया ठीक. तो अभी आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस टुडे. कहाँ पे इम्प्रूव करना है सर हमें सर? एक तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी में आंसर करना है. इंटरप्टेड आंसर नहीं करना है. यू कैन आंसर इन हिंदी, इंग्लिश, एनीवे, बट स्मूथली कंप्लीटली आंसर करना है. ऐसा नहीं कि दो चार वर्ड्स बोले और फिर आपने छोड़ दिया. कंप्लीट आंसर करना है. टेक्निकल वर्ड्स यू नीड टू यूज, और थोड़ा सा कंसेप्ट और बिल्ड करना है आपने. बहुत अच्छे कंसेप्ट नहीं लग रहे मेरे को अभी आपके हीट ट्रांसफर में देश. और आप एक्सपेरिमेंट तो आपने देखा ही नहीं कोई हीट ट्रांसफर का. दे कैन आस्क सम क्वेश्चन ना, कि आप पढ़ा रहे हो तो आप किसी लैब में गए हो कभी, आपने देखा है कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स है. दे कैन आस्क यू सम एक्सपेरिमेंट्स. कोई बताओ, 4-5 एक्सपेरिमेंट्स के नाम बताओ. तो लैब में देख लो एक बार जो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. Yes. अब क्यू कहां से मेजर करेंगे? फॉर दैट वी नीड टू अटैच सम सप्लाई कोयल वगैरह अटैच करते हैं. वी नीड टू माउंट सम काइंड ऑफ कोयल, रजिस्टिव कोयल. तो करंट पास करेंगे. सो वी नीड टू मेजर द वोल्टेज अप्लाइड सप्लाइड एंड करंट. VI से हम क्यू मेजर करेंगे. बट VI इक्वल टू क्यू कब होगा? जब वो रोड किस पे है, स्टेडी स्टेट में. तो पहले हम क्या करेंगे, उसमें करंट और पास करके उसको छोड़ देंगे. कितने टाइम के लिए? जब तक वो स्टेडी स्टेट में ना आ जाए. कैसे चेक करेंगे स्टेडी स्टेट में आ गया? मान लीजिए ये रोड है, इस रोड के यहाँ पे मैंने कोयल माउंट किया हुआ है. ठीक है, कोयल माउंट करके मैंने वोल्टेज और करंट पास कर दिया. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सपोज आई एम मेजरिंग द टेम्परेचर. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने कूलिंग वाटर को सर्कुलेट कर दिया. ओके, सो आई नीड टू मेजर द टेम्परेचर, कि यहाँ पे टेम्परेचर स्टैटिक हो जाए, टेम्परेचर चेंज ना हो. एट ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज ना करे. ऑब्वियसली विद एक्ट लेंथ टेम्परेचर चेंज करेगा, बट एट ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज ना करे. तो आप क्या करोगे? यू नीड टू मेजर द टेम्परेचर. आधा घंटा तो आप इसको चलने दोगे. आफ्टर हाफ एन आवर यू आर गोइंग टू मेजर द टेम्परेचर, कि अभी क्या टेम्परेचर चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा. मींस नाउ द रोड इज इन व्हाट, स्टेडी स्टेट. जब स्टेडी स्टेट में होगा तभी आप वो इक्वेशन लगा सकते हो, Q इक्वल टू माइनस KA dt by dx. Yes, sir. dt by dx तो आप इजीली मेजर कर सकते हो. 2 थर्मोकपल लगा दोगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लोगे. यू विल इजीली गेट द dt by dx. Yes. dt by dx आप मेजर कर सकते हो. एरिया आपको पता है, परपेंडिकुलर एरिया कितना है.
और स्टेडी स्टेट में अगर वो है, क्यू आपको पता है, वट एवर इलेक्ट्रिसिटी यू आर सप्लाइंग, एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट इन स्टेडी स्टेट, तो फिर आप फूरियर लॉ लगा सकते हैं, एंड यू कैन इजीली मेजर द कंडक्टिविटी। आर यू गेटिंग नीतीश? Yes, sir. हाँ, चलो ठीक है, ये अभी पढ़ो, इसको रिवाइज करो चीजों Thank को, you, एंड sir. अगेन Yes, sir. ओके, गुड लक।